Welcome to my channel, the Proton Family. Today I am going to explain the topic pressure volume relationship in gases. The topic is pressure volume relationship in gases. First of all, I will give you example of a syringe here. You can see, students, here I have drawn two syringes here. You can see this. This is the piston of the syringe. Here in this part, air is present in the syringe. Here you will have a weight. Whenever we will put pressure here on this part, what will happen? This piston will move downward. Okay, here in the next figure you can see the piston is moving little bit downward. And what happened to volume of air here? यहाँ पे देखो space कम है, so volume of air is less here. Okay, so here whenever we are putting the weight on the piston or putting pressure on the piston, what happens to the volume of the air? It is decreasing. और यहाँ पे देखो comparative to this syringe, here the piston is up little bit, but here see the volume. When the piston is not pressed more, the volume of the air is also more. Okay, it means, but this example show to you that whenever we are putting the weight means whenever we are putting the pressure on the piston. तो जैसे हमने वहां पे प्रेशर मीन्स कि वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर. ओके, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर हियर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज डिक्रीजिंग. प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज increasing. So here this show that pressure and volume having a relationship in the case of gases. So here same thing you can see in the words also. Here example of a syringe I have already explained. Take example of a syringe fitted with the piston. On placing some weight on the piston, it moves downward and reduce the volume of the air inside the syringe. Okay. When we will remove the weight, जब आप वहां से remove कर दोगे weight, what will happen? The piston will move upward and volume of the air increases inside the syringe. So here, what is the conclusion of this syringe experiment? Here the conclusion is, what is the conclusion? An increase in the pressure, decrease in volume, and decrease in pressure, increase in the volume of a gas. So here, in the pressure volume relationship, you can give example of a syringe. Next part I am going to explain, that is Boyle's law. Students, see the next part. I am going to explain. This is Boyle's law. In Boyle's law also there is pressure and volume relationship. यहाँ पे जो temperature है वो क्या होता है? Constant होता है. So see the law first. What is the law explanation first? The volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. See again the law. Volume of a given mass of dry gas means कि this gas is totally dry. उसकी जो volume है, it is inversely proportional to pressure. Inversely proportional to pressure means when the volume is increasing, pressure decreasing. When pressure is increasing, volume is decreasing. And here the temperature is constant. Okay, next one is, now see the same thing you can see in the mathematical expression. Here it is the same जो words थे ऊपर उसके law के, उसका same जो mathematical expression है, that is volume inversely proportional to pressure. यहाँ पे 1/p लिखा है ना,
1 upon P means it is inversely proportional to pressure volume. What is the meaning of this relationship? That when volume is increasing, pressure is decreasing. When volume is increasing, pressure is decreasing, then volume is decreasing and pressure is increasing. Here, let us see the mathematical expression of this gas law. Here, you can take suppose a gas occupy a volume V1. जैसे इनिशियल है, इनिशियल स्टेज पे जो गैस की वॉल्यूम है दैट इज V1, ओके, एंड उसका जो प्रेशर है P1 है. तो इसी रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, इनिशियली जो वॉल्यूम है दैट विल बिकम V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P1. ओके, नाउ ये जो बीच में है दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हमने अभी रिमूव करना है. यहाँ पे तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम को इकट्ठे करना, तो यहाँ पे आ गया P1 B1 इक्वल्स टू K. व्हाट इज दिस K? दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स दैट विल नॉट चेंज, जिसकी वॉल्यूम वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. तो ये P1 B1 है, इसको हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन. ओके, जैसे आपने सिरिंज की एग्जांपल ली थी, तो सिरिंज में जैसे एक में वॉल्यूम जो शो किया कि इट इज डिक्रीजिंग व्हेन पिस्टन इज प्रेस्ड, तो वो जो बिना प्रेशर अप्लाई किए जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 होगी. जब पिस्टन प्रेस कर दिया तो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, तो वॉल्यूम विल बिकम V2 एंड the pressure will become P2 then. So then after that what will be the expression? The expression will be here the expression will be V2 is proportional to P2. यहाँ पे जो चेंज करने के बाद जो वॉल्यूम बन गई है वो V2 एंड प्रेशर क्या है P2. तो अभी यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो उसकी प्लेस पे K आ जाएगा, तो इट विल बिकम P2 V2 इक्वल्स टू K, और K क्या है, कांस्टेंट है. इसको हमने नंबर 2 दिया है. नाउ वी विल कंबाइन बोथ दीज एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस, दोनों को आप कंबाइन कर लो, इकट्ठे कर लो, तो क्या आएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, इट इज इक्वल्स टू K, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपके पास आया दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ इक्वेशन. हियर एट द एंड K आपको पता है कि कांस्टेंट है, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस K, तो यहाँ पे आ गया P1 B1 इक्वल्स टू P2 V2. हियर द प्रेशर इज कांस्टेंट. मीन्स जो बॉयल्स लॉ है, मेन जो बॉयल्स लॉ है, बट इट एक्सप्लेन pressure volume relationship. Here the temperature is constant. So students, I hope you will understand this Boyle's law and you will learn the definition of Boyle's law. And ये जो मैंने लास्ट में explain किया है, this is called mathematical expression. You will also learn this mathematical expression of a Boyle's law. Okay, thank you students.